Alright, guys, good evening, good evening, good evening. Welcome to Surgical Saturday. Today's topic is again another exciting one. We'll be talking about shock. If anybody's there, give a shout out or anything that you want to ask. कोई सवाल, कोई शक, कुछ पूछना है? So all the guys out there, good evening, hi, hello, how are you? चलो, so आज का जो सर्जिकल सैटरडे है, इट इज़ डेडिकेटेड टू शॉक. ठीक है. शॉक आर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एट मल्टीपल लेवल्स, क्लिनिकल प्रैक्टिस में, एग्जाम में समझना, कॉन्सेप्चुअल, बहुत सारी चीज़ें. ठीक है. इन जनरल अगर मैं बोलूँगा शॉक क्या होता है, शॉक इज़ डिफाइंड एज सिस्टमिक, इट इज़ डिफाइंड एज सिस्टमिक स्टेट ऑफ लो टिश्यू परफ्यूजन. It is a systemic state of low tissue perfusion and this is what shock is basically defined of. ठीक है. तो low tissue perfusion का मतलब ये है कि whenever you have there is increase in demand of oxygen, there is increase in demand of oxygen but there is decreased supply, there is decreased supply of oxygen, or you can say there's decreased utilization of oxygen. Either ways we call this as shock. ठीक है. Yeah. बेटा बैक टू बैक लेक्चर्स कोई टेंशन नहीं है यार. बैक टू बैक 12-12 घंटे 4-4 दिन 6-6 दिन कंटिन्यूस ले लेते हैं. वो उसकी स्टैमिना पे सवाल नहीं उठाना. ठीक है. सर्जन है भाई, स्टैमिना इज इनबिल्ट. वो विद इनबॉर्न स्टैमिना के साथ आते हैं हम लोग, उसका कोई टेंशन ही नहीं है. अच्छा, सो व्हेन वी टॉक अबाउट शॉक, नो couple of important things. अगर आपसे पूछेंगे कि what is the most common type of shock, the most common type of shock overall is going to be your hypovolemic shock. It is your hypovolemic shock. अगर आपसे पूछेगा कोई कि कितने टाइप के शॉक होते हैं, आपने सिंपली बोलना है 3 टाइप के शॉक होते हैं. एक आपका हाइपोवोलेमिक है, दूसरा कार्डियोजेनिक है, तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है. डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में आपके एग्जांपल्स आते हैं सेप्टिक, एनाफाइलैक्टिक, योर स्पाइनल शॉक. ऑल दीज कम्स इन द कैटेगरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव. सो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक इटसेल्फ हैज मल्टीपल वेज. 3 डिफरेंट टाइप के शॉक्स हैं व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड. नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड शॉक वी विल बेसिकली अंडरस्टैंड अ वेरी स्मॉल सर्किट. ये सर्किट जो है कोई बड़ा हाईफाई सर्किट नहीं, हम सबको पता है. एक छोटा सा रिविजन ले लेते हैं सर्किट का ताकि आप और मैं एक ही पेज पे. नाउ इमेजिन करिए ये आपका राइट एट्रिया है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है, ये आपका लेफ्ट एट्रिया, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है. ठीक है. फैंसी बातें बोली जाती हैं तो आई जस्ट ट्राई टू क्लैरिफाई क्या फैंसी बातें. अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द राइट एट्रियल प्रेशर, द राइट एट्रियल प्रेशर इज मेजर्ड बाय जेवीपी, दैट इज योर जुगुलार वीनस प्रेशर. कोई पूछेगा हाउ डू यू मेजर योर लेफ्ट एट्रियल प्रेशर, तो आप एक और फैंसी वर्ड चिपकाओगे, उसको बोलते हैं पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर. ठीक है. So the pressure in the right atria is measured by JVP. The pressure in the left atria is measured by pulmonary capillary wedge pressure. Pulmonary capillary wedge pressure बोलने के लिए यही है कि ये इतना बता रहा है कि प्रेशर इन द लेफ्ट एट्रिया क्या है. राइट एट्रियल प्रेशर इज डिनोटेड बाय जेवीपी. यही दो चीजें हैं जो इन दोनों मतलब जेवीपी और पीसीडब्ल्यू और पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर क्या डिनोट करते हैं. मोटा मोटा जेवीपी आपका ये बताता है कि राइट एट्रिया में कितना प्रेशर है और पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर ये बताता है कि लेफ्ट एट्रिया में कितना प्रेशर है और कुछ नहीं. ठीक है. अच्छा, तो कहानी कुछ ऐसी है कि ब्लड जो है वो राइट एट्रिया में आया फ्रॉम द सर्कुलेशन, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से घूम के लेफ्ट एट्रिया में आया, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया. नाउ द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज गोइंग टू बी अवेलेबल इन लेफ्ट वेंट्रिकल जस्ट बिफोर द कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है. लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड आता है ना जस्ट बिफोर द कॉन्ट्रैक्शन, वॉट एवर इज द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज अवेलेबल इन द लेफ्ट वेंट्रिकल बिफोर द कॉन्ट्रैक्शन इज वॉट वी कॉल इट एज प्रीलोड. तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है दैट वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई ये प्रीलोड और आफ्टर लोड क्या होता है. बहुत लोड ले रखा है हम लोगों ने इसके बारे में, इसको बड़ा सिंप्लीफाइड तरीके से जानते हैं. प्रीलोड वो ब्लड होता है दैट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज अवेलेबल इन द लेफ्ट वेंट्रिकल जस्ट बिफोर द कॉन्ट्रैक्शन. द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज अवेलेबल इन द लेफ्ट वेंट्रिकल जस्ट बिफोर द कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज प्रीलोड.
What is an afterload? It is the amount of blood that is left behind in the left ventricle after the contraction. This is what we call it as afterload. तो blood गया कहाँ? Blood चला गया बाहर. So the amount of blood that is ejected out with every contraction. हर contraction पे जो blood left ventricle से बाहर जाता है aorta में. I'm talking about the blood that is ejecting out of the left ventricle into the aorta. This is what we call it as stroke volume. और यही stroke volume per minute आपका heart rate, I mean per minute या cardiac output बन जाता है. तो I can say the cardiac output is equal to preload minus afterload per minute. As simple as that. ठीक है. तो cardiac output को लिखने के लिए एक और तरीके से आप लिख सकते हो stroke volume into heart rate. These are the two ways you can write the cardiac output. Now, when we say the cardiac output, it is the amount of blood that is coming from the left ventricle into the aorta. अब जो arch of aorta है, the arch of aorta consists of a specialized pressure receptor. ये जो pressure receptor है, this is what we call it as the baroreceptor. Now, this baroreceptor is extremely sensitive for any pressure change that is going to happen. Now, whenever the pressure inside the aorta is going to drop, the baroreceptors are going to get activated. Now, once the baroreceptors get activated, they activate the sympathetic system. And whenever the sympathetic system is going to get activated, they are going to release excessive amount of catecholamines. And one of the examples are epinephrine and norepinephrine. Or the effect of epinephrine, norepinephrine on the heart, that they increase the heart rate. So, whenever the volume of blood in the aorta becomes less, the aortic pressure drops. Whenever the aortic pressure drops, the baroreceptors are going to get activated. Whenever the baroreceptors are going to get activated, they will activate the sympathetic system. Activation of sympathetic system will cause excessive release of epinephrine and norepinephrine, and their effect on the heart. Their effect on the heart is going to increase the heart rate. So the heart rate is going to shoot across here. Right now we have baroreceptors where one baroreceptor is present at the arch of aorta, another one will be present at the carotid bifurcation. Okay. Now from here you will see that the blood that is ejected into the aorta will travel into the aorta, and then it will be going into various blood vessels. There will be a juncture where it has to divide the blood into two components. One is what we call it as the vital organs. Another one is what we call it as the non-vital organs. So we have the vital and the non-vital organs which are present. You will notice when the blood comes to the junction, आप ये notice करोगे कि ज़्यादा जो blood है ना, more amount of blood will be pumped into the vital organs, और बचा हुआ जो blood है that will now go into the non-vital organs. तो कहने के लिए अगर आपसे पूछेंगे ज़्यादा ब्लड किसको जाता है, मोर अमाउंट ऑफ ब्लड इज गोइंग टू बी डिलीवर्ड टू वाइटल ऑर्गन्स एंड लेस अमाउंट ऑफ ब्लड इज डिलीवर्ड टू नॉन वाइटल ऑर्गन्स. ये हो क्यों रहा है? But the reason why it is happening is there is nothing which is very fancy about it. There's a very simple context that we call it as the peripheral vascular resistance. Now the PVR itself, what is PVR? Peripheral vascular resistance. It is the resistance offered by the blood vessels of the peripheral organs to the blood flow, so that more amount of blood is going to flow into vital organs. If you do not understand this, I'll give a very simple analogy. Now imagine that this is the highway that you have. Now after going for a component period, or let's say for a bit of distance, the highway splits into two divisional roads which are present, and they are going to be in this particular manner. Let's say this is road A and this is road B. Now let's say you are the one who are driving a car. Which direction? Because let's say both of them will go to the same destination. क्योंकि अगर मैं बोलूँगा कौन सा रोड लोगे तो आप बोलोगे सर डिपेंड्स करता है कि जाना कहाँ पे. तुम्हारे से ज़्यादा स्मार्ट मैंने देखा ही नहीं है. ठीक है. तो टू बी पॉलिटिकली एंड टेक्निकली करेक्ट, मान लो दोनों रोड एक ही जगह पे पहुँच रही है और इस रोड पे 10 कार्स हैं. ठीक है. लेट्स से मल्टीपल कार्स व्हिच आर ट्रैवलिंग इन दिस पर्टिकुलर रोड. अब आप मुझे बताओ कि मैक्सिमम कार्स जो है वो कौन सा रोड लेंगी. द मैक्सिमम कार्स विल टेक द रोड विच इज़ गोइंग टू बी योर रोड ए, क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टेंस कम है, ज़्यादा स्पेस है, तो ये आराम से रोड ए में चला जाएगा. जब रोड ए पूरा भर जाएगा उसके बाद कार्स विल ट्राई टू बाइफरकेट इनटू रोड बी, क्योंकि रोड ए में स्पेस ज़्यादा है, रेसिस्टेंस कम है, और रेसिस्टेंस कम है इसलिए ज़्यादा फ्लो होगा, तो मैक्सिमम लोग जो है वो रोड ए में जाना पसंद करेंगे. ठीक है. रोड बी में कम लोग जाना पसंद करेंगे. इसी को आप पेरिफेरल वास्कुलर रेसिस्टेंस के नाम से एड्रेस कर रहे हो. तो पीवीआर क्या बोलता है कि बेटा ये जो कार्स है ना, रोड ए में और रोड बी में बाय चॉइस नहीं जा रही,
क्योंकि रोड ए में जगह नहीं बची तो रोड बी में जा रहे हैं। तो इट इज द रेसिस, क्योंकि रोड भी इतना पतला है कि कोई प्रेफर ही नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि इट इज सच अ नैरोड स्पेस, नोबडी वांट्स टू गो अंटिल अनलेस रोड ए इज आल्सो कंजेस्टेड, एंड दैट इज द कांसेप्ट ऑफ पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस। इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय रोड बी, दैट इज व्हाई मोर कार आर गोइंग टू रोड ए। बाय चॉइस नहीं जा रहे हैं रोड ए में, क्योंकि जगह नहीं है रोड बी में, इसलिए रोड ए में जा रहे हैं। आई बात समझ में? ठीक है, सो दिस इज योर द कांसेप्ट ऑफ पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस। एक बार ब्लड आपका वाइटल नॉन वाइटल में चला गया, वहां से ब्लड इज गोइंग टू कम बैक टू दी सिस्टमिक सर्कुलेशन है, एंड दिस इज एड्रेस्ड एज योर वास्कुलर पूल। तो मोटा मोटा इसको आप वास्कुलर पूल के नाम से जानोगे, ठीक है। अब वास्कुलर पूल से क्या होगा, ब्लड जो होगा इट विल स्टार्ट टू पंप बैक। नाउ एज द ब्लड इज पंपिंग बैक, इट इज नाउ गोइंग टू गो डाउन टू द राइट एट्रिया, फ्रॉम देयर इट इज गोइंग टू गो इनटू राइट वेंट्रिकल, एंड द सर्किट इज कंप्लीट, ठीक है। बड़ा सिंपल सा सर्किट है यही। अगर इसी सर्किट को समझ लिया तो बेटा शॉक की पूरी दुनिया समझ ली, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ सिंपल कॉन्टेक्स्ट कि ये सर्किट में ना मोटा मोटा हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि व्हेनेवर द ब्लड कम्स टू द राइट एट्रिया, इट गोस टू राइट वेंट्रिकल, फ्रॉम देयर इट गोस इनटू लेफ्ट एट्रिया, फ्रॉम देयर टू लेफ्ट वेंट्रिकल। इतना सबको पता है। तो राइट एट्रिया का जो प्रेशर है उसको मेजर करने के लिए हम एक आर्बिट्री एक वर्ड और एक प्रेशर फिनोमेना लेके चलते हैं, जेवीपी। तो जेवीपी का फुल फॉर्म है जुगुलर वीनस प्रेशर, लेकिन जुगुलर वीनस प्रेशर मेजर करके क्या करोगे, मुझे ये मेजर करके ये पता चलेगा कि राइट एट्रिया में प्रेशर कितना है। तो माई बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू मेजर द प्रेशर इन राइट एट्रिया, तो उसको हम जेवीपी के थ्रू मेजर करते हैं। तो इसी के लिए लेफ्ट एट्रिया प्रेशर भी मेजर कर लो। कैसे मेजर करो, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रिया गोस टू लेफ्ट वेंट्रिकल, जितना ब्लड आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचा बिफोर कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड एज प्रीलोड, और जितना ब्लड बचा आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन इज योर आफ्टरलोड, ठीक है। प्रीलोड माइनस आफ्टरलोड कर लो, आपको कार्डियक आउटपुट मिल जाएगा, लेकिन वो आपका कार्डियक आउटपुट पर मिनट करना पड़ेगा ना, क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम पर कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो पर कॉन्ट्रैक्शन कितना ब्लड निकला, स्ट्रोक वॉल्यूम पर मिनट कर लो उसको विद हार्ट रेट पर मिनट, मतलब हार्ट रेट से मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट योर कार्डियक आउटपुट, ठीक है। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। अब ब्लड वापस आयोटा में, आयोटा के आर्च में एक हमारा स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर है, उसको बोलते हैं बैरोरेसेप्टर। जब भी आयोटा में प्रेशर ड्रॉप होता है तो बैरोरेसेप्टर में प्रेशर, आई मीन द बैरोरेसेप्टर गेट्स एक्टिवेटेड, तो बैरोरेसेप्टर गेट्स सेंसिटाइज्ड। तो जैसे ही बैरोरेसेप्टर एक्टिवेट होता है, सिंपैथेटिक ड्राइव cause excessive amount of epinephrine, that is catecholamines, epinephrine, norepinephrine, heart rate will start to show. Now blood जैसे aorta में जा रहा है, whenever is there more amount of blood will go into vitals, less to non-vitals. It is not because vitals demand more blood. Of course they require more blood, but the reason why more amount of blood is going to vitals, it is because the resistance offered by the non-vital organs, so that more amount of blood is going to vital organs. वहां से वापस आना कहाँ पे है, ठीक है, चाहे कहीं पे भी जाओ, आना vascular pool में ही है, ठीक है। सो अल्टीमेटली द ब्लड विल रिटर्न बैक टू वास्कुलर पूल, फ्रॉम देयर इनटू हार्ट, एंड द सर्किट इज कंप्लीटेड, एज सिंपल एज दैट। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आपके लिए एक छोटी सी कंपोनेंट, हम बोलते हैं वास्कुलर पूल को कंपार्टमेंट ए मानो, हार्ट को कंपार्टमेंट बी मानो, और पेरिफेरल वास्कुलर रेसिस्टेंस को कंपार्टमेंट सी मानो। व्हेनेवर देयर इज डैमेज इन कंपार्टमेंट ए, इसको आप हाइपोवोलेमिक शॉक बोलोगे। कंपार्टमेंट बी में डैमेज है, कार्डियोजेनिक शॉक बोलोगे। और अगर पेरिफेरल वास्कुलर रेसिस्टेंस में डैमेज है और लॉस ऑफ पेरिफेरल वास्कुलर रेसिस्टेंस, इट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव और सेप्टिक शॉक। आई बात समझ में? जो बच्चा डायरेक्टली देख रहा है क्विक फीडबैक दे दो, बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, अगर ये बात समझ में आ गई, इसी को अगर मैं थोड़ा इफ आई पुट देम इनटू पर्सपेक्टिव यू विल गेट द आंसर्स। तो हम जो शॉक के स्टेटस है ना उसको हम मेजर करेंगे और विल ट्राई टू इवैल्यूएट ऑन दीज पर्टिकुलर पैरामीटर्स, ठीक है। हाइपोवोलेमिक, कार्डियोजेनिक, सेप्टिक शॉक का कंपोनेंट है। CO stands for cardiac output, HR is heart rate, SBP is a systolic blood pressure, JVP is a jugular venous pressure, PCWP is a pulmonary capillary wedge pressure, PVR is a peripheral vascular resistance, and last में हम skin temperature measure करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, right? Imagine करो that there is a damage in the vascular pool. Now, if there is a damage in the vascular pool, what will happen? The blood will start leaking out of the vascular pool. Okay, blood is now leaking out of the vascular pool. Now, if the blood is leaking out of the vascular pool, the volume of blood in the vascular pool will decrease. Agreed? ठीक है। अगर vascular pool में blood कम होगा, that means the blood going back to the right atria. So you will notice that the blood going back to the right atria is going to decrease. क्योंकि vascular pool में blood कम है, तो blood going back to the right atria is going to decrease. So the right atrial pressure will also decrease. अब ये जो राइट एट्रियल प्रेशर है वो आप किससे मेजर कर रहे हो, मेजरिंग विद जेवीपी। तो आप देखोगे हाइपोवोलेमिक शॉक में जेवीपी ड्रॉप करता है, ठीक है, बिकॉज द ब्लड गोइंग टू द राइट एट्रिया इज लेस, राइट एट्रियल प्रेशर ड्रॉप्स, राइट एट्रियल प्रेशर मेजर्ड बाय जेवीपी, जेवीपी ड्रॉप करेगा। अगर राइट एट्रिया में ब्लड कम है तो ऑब्वियसली राइट वेंट्रिकल में भी
you'll see in the right ventricle also, in the right ventricle also the blood will become less. ठीक है, तो right atria में अगर blood कम है, this is the right atria, this is the right ventricle. Okay. If the volume of blood in the right atria is less, the volume of blood in the right ventricle will also be less. That means the blood going back to the left atria will also be lesser. So the left atrial pressure will also drop. ठीक है, तो vascular pool में blood leak हो गया, तो volume of blood in the vascular pool is less. The blood going to the right atria is less. That means the blood going to right ventricle is less. तो ultimately left atria में जो blood आएगा वो भी कम आएगा. तो left atrial pressure is measured by pulmonary capillary wedge pressure. Hence pulmonary capillary wedge pressure will also decrease. Okay. Now if the blood in the left atria is less, needless to tell you that the blood in the blood that is going to be present, okay, this eraser was slightly misbehaving, I got it. Okay, now if the blood in the left atria is less, that means the blood available in the left ventricle will also become less. अगर blood in the left ventricle is less, इसका मतलब क्या है, preload कम हो गया. अगर preload कम हो गया, that means amount of blood available in left ventricle, no? अगर preload कम हो गया, amount of blood going into the aorta will also become less. That means stroke volume will become less. अगर stroke volume कम हो जाएगा तो cardiac output कम हो जाएगा. So you will notice the amount of blood going out into the aorta decreases, so the cardiac output decreases. Now, if the cardiac output decrease, that is the amount of blood going into the aorta decrease, the aortic pressure drops. Aortic pressure क्या है? Systolic blood pressure. Systolic blood pressure drops. Whenever there is decrease in aortic pressure, baroreceptors get activated. Catecholamines, epinephrine, norepinephrine, that is going to cause increase in heart rate. ठीक है? As a compensatory. So shock क्या होता है? Shock is nothing but you have hypotension. It is hypotension with tachycardia. That is what it is denoting here. Now, as the blood that is going to go, as the blood that is ejecting out is less, that means the amount of blood reaching the peripheral circulation will also become less. Now as the blood in the aorta is less, that means the blood going into the vitals and non-vital organs will be less. The vital organs require more amount of blood. So how will the body make sure, even if the volume of blood available is less, maximum amount of blood should go to vitals? In that manner, if you have road A and road B, I want more cars to go into road A, no matter, even if the cars are becoming less. Imagine if the cars are becoming less, but whatever is present, I want more cars to go to road A than road B. What will you do? All that I have to do is I have to make road B even smaller. If I somehow squeeze the road B and if I make the road B even smaller, what is going to happen? Again, the volume of the cars going into road A will further increase. So what is happening to the resistance in road B? Further increased, and that is why the peripheral vascular resistance will increase. Now, whenever the peripheral vascular resistance will increase, whatever amount of blood is available, more will go to vitals, less will go to the non-vital organs. So the blood supply to the non-vital organs will further decrease. Skin is an example of non-vital organs. Blood is responsible for calorigenesis. Low amount of blood flow to the skin indicates low calorigenesis. That means the skin temperature, that is the temperature generated, or I can say the skin temperature per se, because of low blood flow, will become less. Hence, it will become cold periphery. So all patients of shock will have cold peripheries. आई बात समझ में? Simple the concept. ठीक है? Yeah. Okay. So let's continue. तो ये आपका हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया. कार्डियोजेनिक शॉक पे देख लेते हैं. कार्डियोजेनिक शॉक में नो, इफ आई लुक एट द एंटायर प्रोस्पेक्टिव, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम. इस बार कार्डियोजेनिक शॉक में आई वुड लाइक टू टेल यू दैट द हार्ट इज नॉट पंपिंग इफेक्टिवली. अगर हार्ट इफेक्टिवली पंप नहीं कर रहा है तो कार्डियक आउटपुट ऑब्वियसली कम हो जाएगा. अगर कार्डियक आउटपुट कम होगा, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड गोइंग इनटू द आयोटा विल ड्रॉप, सो द आयोटिक प्रेशर विल ड्रॉप, दैट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. जब भी आयोटिक प्रेशर ड्रॉप करेगा, बारोरेसेप्टर्स, कैटेकोलामीन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, व्हिच विल कॉज इंक्रीज इन हार्ट रेट. यहाँ तक ठीक है.
Now, because the volume of blood from the left ventricle, that is the cardiac output, is decreasing, that means the volume of blood coming into the aorta is less. That means the volume of blood going to the vitals and non-vital organs will be further lesser. So hence, what is going to happen? Your peripheral vascular resistance is going to increase, so that more amount of blood can go into vitals when compared to non-vitals. The blood supply to the non-vital will decrease, hence decreasing the calorie genesis. So in cardiogenic shock also you'll have cold peripheries. Now here is a trick point. As you all know, in the cardiogenic shock, the volume of blood coming into the aorta is less. That means the volume of blood going into the vitals and non-vitals is going to be less. That means the volume of blood coming back to the vascular pool. Now, if I denote, the volume of blood coming back to the vascular pool will also become less. Now, as the volume of blood coming into the vascular pool is going to be less, that means the volume of blood going back to the right atria as well as left atria should also become less. Now, as they become less, the JVP and the pulmonary capillary wedge pressure should decrease, but that does not happen. Why? The reason it does not happen is you will notice that all four chambers, because heart is not able to pump effectively, the heart is now filled up with the blood. आई रिपीट अगेन, कार्डियोजेनिक शॉक में हार्ट पंप ही नहीं कर पा रहा. अगर पंप नहीं कर पाएगा तो वो पूरा ब्लड बाहर निकाल नहीं पाएगा. तो चारों चेंबर्स में ऑलरेडी ब्लड भरा हुआ है. नाउ एज चारों चेंबर्स में ब्लड भरा हुआ है, इवन दो द वॉल्यूम ऑफ ब्लड कमिंग इज लेस, बट ऑल फोर चेंबर्स ऑलरेडी हैव रेसिडुअल वॉल्यूम, तो क्या होगा? चेंबर्स के प्रेशर्स इंक्रीज हो जाएंगे, हेंस रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन जेवीपी एज वेल एज पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर. कार्डियोजेनिक शॉक में हार्ट ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है, तो ब्लड बाहर जा ही नहीं पा रहा. तो because the effectively blood is not able to go out completely, residual blood तो present होगा, तो already चारों chambers में पूरा blood है और additionally blood आएगा तो pressure और increase हो जाएगा. तो JVP and pulmonary capillary wedge pressure will be high in cardiogenic shock. As simple as that. ठीक है. Now इसी के context में अगर आप septic shock बोलोगे, septic shock थोड़ा और conceptual है, तो इसको will take in the same context. तो imagine करिए, so let's say this is, we are going to talk about the septic shock. So I'm going to remove all these connotations here. Now, septic shock की story ये है कि peripheral vascular resistance is lost. ठीक है. Now that can be because of excessive vagal tone, or it can be because of spinal shock where the sympathetic drive is cut off, or it can be because of bacterial endotoxins which are damaging the sympathetic drive. Any of those contexts, you need to understand the peripheral vascular resistance is lost. अगर हम अपनी स्टोरी में बात करेंगे पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस का जो एसेंस है, अब आप देखोगे ये जो हाईवे ना पहले बटा हुआ था इन दो कॉन्टेक्स्ट में, अब क्या हो जाएगा? यू विल नोटिस नाउ the highway itself is going to be divided into two equal roads. अब ये road A, road B जो initially इतने disparity में थे, now they are going to present to you with equal size. They are going to present with equal size. So now because they present with equal size, now what is going to happen? You will notice that equal amount of cars are now going to go into both road A as well as road B. Okay, so now when we say this loss of peripheral vascular resistance, अब रोड बी भी चौड़ा हो गया, तो दोनों कार्स जो हैं आई मीन दोनों रोड्स पे कार्स इक्वली जाना शुरू हो जाएंगी. तो इसका मतलब क्या है कि दोनों ऑर्गन्स, वाइटल्स और नॉन वाइटल ऑर्गन्स को इक्वल अमाउंट ऑफ ब्लड मिलने लगेगा. प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वाइटल्स के रिक्वायरमेंट ज्यादा है, नॉन वाइटल्स की कम है. तो जहां पे रिक्वायरमेंट ज्यादा है वहां पे कम सप्लाई है, और जहां पे रिक्वायरमेंट कम है वहां पे ज्यादा सप्लाई है. सेम हम भी वही करते हैं लाइफ में, जहां पे एनर्जी लगानी है वहां पे नहीं लगाएंगे, ठीक है, और जहां नहीं लगानी वहां ज्यादा लगा लेंगे. ठीक है, जैसे पढ़ने में लगानी है वहां कम लगेगी, लेकिन अगर पार्टी के लिए बोल रहे हो, रात को मूवी बोल रहे हो, 2 बजे 3 बजे सब रेडी है. ठीक है, सो यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द एनर्जी. तो लाइफ हमारी सेप्टिक शॉक में ही चल रही, क्योंकि लाइफ में हमने वो प्रायोरिटाइज ही नहीं किया, जैसे सेप्टिक शॉक में प्रायोरिटाइज नहीं किया कि ये ब्लड ज्यादा वाइटल को चाहिए था, लेकिन दे नॉन वाइटल को रहा है. ठीक है, नॉन वाइटल को जरूरत ही नहीं है, नॉन वाइटल तो मैं तो खुश हूँ, पता नहीं और खा. ठीक है, ओवर कंजेशन. नाउ इतना याद रख लेना, सेप्टिक शॉक में एक तो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक बोलते हैं. दूसरा, बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ वेगल टोन, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? देयर विल बी अ यूनिवर्सल वेजोडाइलेशन. तो आप देखोगे आपका जो आयोटा से लेके सब जितने भी ब्लड वेसल्स है, all these blood vessels are going to become super dilated. मतलब इसमें सब there is loss of tone. Loss of tone का मतलब ये है, now they have lost the ability to contract and relax. So hence all these vessels have become super dilated. ठीक है, तो there is loss of
tone of the aorta or any other vessel, so aorta is also become superly dilated. ठीक है, तो septic shock में problem क्या है? Septic shock में there is loss of peripheral vascular resistance, so more blood is going to vital organs. Sorry, more blood is going to non-vital organs, less to non-vitals, less to vitals. Hence, it is called as shock. ठीक है, I repeat again. सेप्टिक शॉक में ब्लड जो है नॉन वाइटल्स में ज्यादा जा रहा है देन इट इज रिक्वायर्ड, और वाइटल्स में कम जा रहा है व्हेन इट इज रिक्वायर्ड. ठीक है, तो वाइटल्स में रिक्वायरमेंट ज्यादा है, फ्लो कम है, नॉन वाइटल्स में रिक्वायरमेंट कम है लेकिन फ्लो ज्यादा है. हेंस इट इज शॉक, क्योंकि वाइटल्स को जरूरत है ना, जहां जरूरत है वहां आप दे ही नहीं रहे. ठीक है, दैट इज द होल कॉन्सेप्ट इन दिस बेसिक सिनेरियो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है, ओके. नाउ in septic shock, there is loss of peripheral vascular resistance. More amount of blood is going to non-vital organs. Hence, more calorigenesis. That means the heat will be produced more. Okay. So the skin temperature will increase in your septic shock. Hence, this is also known as warm. बाकी हर जगह पे जो peripheries हैं वो cold है. In septic shock, it is a warm. ठीक है. Now, let's understand. As the blood that is coming into the vitals and non-vital organs is equally splitting, so blood is going to go into vitals as well as non-vital organs. So eventually vitals or non-vitals से blood आना vascular pool में ही है. So blood coming back to the vascular pool is going to be same. There's no change. Reason being, it is just distributed. Eventually they're coming to the vascular pool. That means the blood going back to the right atria, that is your blood going back to the right atria, remains same. अगर राइट एट्रिया का वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिमेन सेम, द राइट एट्रियल प्रेशर विल रिमेन सेम, सो इनिशियली जेवीपी विल आल्सो रिमेन सेम. ठीक है, इन द सेम कॉन्टेक्स्ट द ब्लड इन द राइट वेंट्रिकल इज आल्सो सेम. दैट मींस द ब्लड गोइंग टू द लेफ्ट एट्रिया इज आल्सो नॉर्मल, सो लेफ्ट एट्रियल प्रेशर, दैट इज पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, विल आल्सो रिमेन नॉर्मल. नाउ इफ इट इज नॉर्मल, दैट मींस द ब्लड गोइंग टू द लेफ्ट वेंट्रिकल इज आल्सो नॉर्मल. दैट मींस प्रीलोड इज आल्सो नॉर्मल. अगर प्रीलोड नॉर्मल है, ब्लड गोइंग इनटू द आयोटा विल आल्सो रिमेन नॉर्मल. दैट मींस स्टोक वॉल्यूम इज आल्सो नॉर्मल. प्रॉब्लम क्या है, स्टोक वॉल्यूम तो नॉर्मल है बट द अमाउंट ऑफ दैट इज द ब्लड दैट इज कमिंग इनटू द आयोटा हैज सम डिफरेंस. अब ये डिफरेंस क्या है? नाउ द प्रेशर और द कंपोनेंट ऑफ प्रेशर इन अ वेसल डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स. नंबर वन, द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड वेसल. इट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स. अगर ये आप ब्लड वेसल मान के चल रहे हो तो इस वेसल में जो प्रेशर है ना, द प्रेशर इनसाइड अ ब्लड वेसल डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स. नंबर वन, द डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल, and number two, it is the volume of the blood vessel. Okay, so how much amount of volume is there and what is the size of the blood vessel? There are two dynamics that you have for pressure. Now imagine if the diameter increases and the volume of blood vessel remains same or normal, what will happen to net pressure? Diameter बढ़ गया लेकिन volume same है, net pressure drop हो जाएगा. Now imagine if the diameter remains normal but the volume of blood decreases. The volume of blood in the aorta or the vessel decrease, what will happen? Net pressure, it will also fall. ठीक है, तो डायमीटर नॉर्मल है, वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर कम हो जाएगा. डायमीटर ज्यादा है, वॉल्यूम नॉर्मल है, तो प्रेशर फॉल हो जाएगा. तो either ways, you need to understand the pressure inside the blood vessel depends upon two dynamics: the size of the vessel and the volume of the component or volume of the blood or the volume of the liquid or gas that is present inside a particular vessel. ठीक है, अब septic shock में or else in your distributed shock, what is happening? Stoke volume is normal. That means the volume of blood coming into the aorta is normal. But what is happening? There is a universal vasodilation. So the diameter of the blood vessel is increasing. Hence the net pressure is decreasing. And that net pressure is your systolic blood pressure. Systolic pressure drops. जब भी systolic pressure drop करेगा, what will happen? Baroreceptors are going to get activated. Catecholamines, epinephrine, norepinephrine. It will cause increase in heart rate. ठीक है, what will happen to cardiac output? हमारा इक्वेशन, cardiac output is equal to stoke volume which was normal, heart rate was increasing, hence the cardiac output will increase. बात खत्म. ठीक है, तो सेप्टिक शॉक में आप देखोगे cardiac output initially increase करता है. ठीक है, so these are the components that how you are going to work up the status of shock. ठीक है, इसी context में आप shock workout करोगे. So far any questions? Quick feedback. Happy Vishu, happy new year guys. All the Mallus down there, shout out, happy Vishu. Clear? So this is how you're going to work out the basic components of shock. कभी भी कोई शक, कोई सवाल रहे, शॉक में रखना मत, क्योंकि शॉक जो है, it is one of the most important topics.
ठीक है? Yeah. If you have any questions, fire it away. कोई सवाल, कोई शक, कोई component? Sure. If you have no other questions, that's the today we wanted to discuss a small concept of shock. I just wanted to understand how all these parameters are going to dangle up and down. So I hope we had a bit of the discussion on that. So shock में ना ज़्यादा से ज़्यादा एक चीज़ पूछ लेगा. Can you tell? देखो, whatever shocks we have discussed, no, in all the components of shock, we discussed two components. What is the heart rate? Another one is systolic blood pressure. In all the shocks, the heart rate was jumping up and the systolic blood pressure was dropping down. Okay, you talk about your any shock, you talk about hypovolemic, cardiogenic, septic shock. अगर आपको भरोसा नहीं, यहाँ पे आके देख लो. हर जगह पे आप देख रहे हो कि हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा है. कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ अ शॉक जहां पे आप देखोगे, एक्सेप्शन अगर आपसे बोलूं, ऐसा शॉक बताओ जहां पे हार्ट रेट भी ड्रॉप कर रहा है और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी ड्रॉप कर. A shock where you have heart rate is dropping, systolic blood pressure dropping, and that is where the sympathetic drive is cut off. कौन सा है? That is going to be your neurogenic. So in the neurogenic shock, the sympathetic drive is cut off. So your spinal shock, your neurogenic shock, जो भी components हैं, you will see in these patients there will be decrease in heart rate because sympathetic drive is cut off, and that is one of your famous exam questions. Okay. So with this, I'm going to terminate the session for today. This is all that you should know in the context of shock. If you have any questions, anything, you can write out here, or else you can also reach out at Instagram channel is the surgery guy. I'm your Dr. Sandeep Serum Reddy. Reach out here as well. So if you have any other doubts, any other topic that you want me to take up, we'll take up that as well. Let me know if you have any specific query as well. Right. So signing off. Thank you guys. Thank you. Have fun. See you guys again. Bye.